Hello students, welcome back to my channel Incredible Scholars। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा द रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का साम्राज्य और साथ में अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ये दोनों टॉपिक हमने क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेक्शन 3 से। So at first, the reign of terror. In my previous video, I had discussed that how monarchy was abolished from France in 1793 and it was transformed, it was declared a republic. And this all was done under the Jacobins. Jacobins, it was one of the most important, most prominent political club in France during the period of revolution. And the leader of this club was Maximilien Robespierre. तो 1793 में 21st of January 1793 the king was publicly executed at a place de la Concorde, and this was how monarchy came to an end in France. इसके बाद फ्रांस के अंदर पावर it came into the hands of the Jacobins and its leader Maximilien Robespierre. So the period from 1793 to 1794 is known as the reign of terror, the reign of terror in France. What was the main reason? इसको हम reign of terror क्यों कहते हैं? This was a period when the power was into the hands of the Jacobins. पावर किसके हाथ में थी? जैकोबिन्स के। और जैकोबिन्स का लीडर कौन था? रॉबेस्पियर। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैक्सिमिलियन Robespierre who was the head of the Jacobins club, controlled power in France. Controlled power in France. फ्रांस के अंदर वो पावर को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। He followed a policy of severe control and punishment. उसने एक पॉलिसी को फॉलो किया जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि जो उसके पॉलिटिकली
अपोनेंट्स थे, जो उसके आइडिया से, जो उसकी पॉलिसीज से एग्रीड नहीं थे, ऑल सच पीपल वर टू बी अरेस्टेड। ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट किया गया। अमंग दीज पीपल वर द एक्स क्लर्जी, वर द मेंबर्स ऑफ एक्स क्लर्जी, एक्स noblemen, members of opposition parties, as well as the members of his own political club. They were all arrested. इन सभी को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, and then they were tried by a revolutionary tribunal. एक revolutionary tribunal यानी कि एक revolutionary court के द्वारा उनको ट्राई किया गया, यानी कि उन पर मुकदमा चलाया गया। एंड इफ दे वर फाउंड गिल्टी, दे वर गुलोटाइन्ड। गुलोटाइन्ड, दैट मीन्स दे वर एक्सिक्यूटेड बाय यूजिंग अ डिवाइस दैट इज व्हाट वी कॉल गुलोटाइन, राइट? सो दिस वाज व्हाट all those whom he saw as enemies of republic, like members of ex-clergy, ex-noblemen, members of opposition, political clubs, as well as members of his own club were arrested and tried by a revolutionary tribunal, right? एक्चुअली ये लोग कौन थे? जो उसकी पॉलिसी से बिल्कुल भी एग्रीड नहीं थे। तो ऐसे सभी लोगों को क्या किया गया? ये कहा गया कि वो रिपब्लिक के क्या हैं? दुश्मन हैं। तो ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट किया गया एंड दे वर ट्राइड बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, एंड इफ they were found guilty, they were guillotined. उनको क्या क्या दिया गया? गुलोटाइन कर दिया गया। गुलोटाइन, दिस वॉज अ स्पेशल डिवाइस जिसको डॉक्टर गुलोटाइन ने इन्वेंट किया था, उसको बनाया था। एक्चुअली दिस वॉज कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स। इसमें क्या होता था? 2 पोल्स होते थे और इन पोल्स के बीच में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता था वेयर द पर्सन वॉज कीपिंग हिज नेक। वो अपने गर्दन को रखता था और यहां पर एक ब्लेड लगा होता था, इस ब्लेड को गिरा दिया जाता था। ठीक है? तो दिस वॉज व्हाट? अ डिवाइस which was basically consisted of 2 poles and a blade with a proper platform for keeping the neck. तो उसकी गर्दन जो है वो काट दी जाती थी। तो ये हमारी क्या थी? गुलोटाइन। इसको बोला जाता था गुलोटाइन। ठीक है? इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलोटाइन। ठीक है? दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज गुलोटाइन। ठीक है? तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता था? अगर
उनको दोषी पाया जाता था तो उनको गुलोटाइन कर दिया जाता था, यानी कि दे वर टू बी एक्सिक्यूटेड. Now, in order to ensure equality or to bring equality within France, Robespierre, he had taken certain steps. उसने कुछ steps जो हैं वो वहां पर इंट्रोड्यूस किए. पहला काम उसने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल he placed maximum ceiling over land and prices of agricultural products. Prices of agricultural products. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके प्राइसेस को उसने सीवियरली कंट्रोल किया, और साथ ही साथ हाउ मच लैंड वाज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फार्मर, इसको भी उसने फिक्स कर दिया. सेकेंडली, peasants were forced to bring their harvest to cities and sell at the prices fixed by the government. राइट, यानी कि फार्मर्स को, जो भी पेसेंट्स थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने हार्वेस्ट को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को कहां लेकर आएंगे? वो शहरों में लेकर आए, और जो भी प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उस प्राइस पर वो उसको सेल करेंगे. ऑल वर forbidden from using expensive white flour and made to use only equality bread, de la Eglite. Fourthly, all titles of inequality were abolished, and people were to be known as les citoyens or les citoyennes. उनको ली सितियन या ली सितोइन के नाम से बुलाया जाता है, यानी कि दीज वर द टू टाइटल्स व्हिच वर यूज्ड फॉर बेसिकली फॉर सिटीजन्स. बाकी जो टाइटल्स थे इनइक्वालिटी के, मैडम या मंशोर, उनको हटा दिया गया, उनको एबोलिश किया गया. चर्च प्रॉपर्टीज, और यू कैन से द चर्च बिल्डिंग्स were
taken over by the government, taken over by the government, by the government, and converted into barracks for soldiers. तो इस तरह से जो चर्च की भी जो बिल्डिंग्स थी उनको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, उनको कन्फिस्केट कर दिया और उनको उन्होंने बैरक्स में, आर्मी के लिए, सोल्जर्स के लिए बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया. रॉबेस्पियर कुड नॉट रूल फ्रांस फॉर लॉन्ग. Finally, what happened? There were many who were not agreed with his policies, with his policy of severe control and punishment. Finally, he was arrested in 1794. उसको 1794 में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट के दूसरे ही दिन उसको भी गुलोटाइन कर दिया गया. So this was how Robespierre's rule or the Jacobins' rule came to an end in France, and with the end of Jacobins, the reign of terror in France also came to an end. Now, moving further, we have a directory rules France. Actually, what happened that we had right now discussed कि किस तरह से जैकोबिन्स ने फ्रांस को रूल किया, किस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी जिसको कहा जाता है सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी उसने फॉलो किया. एक रेन ऑफ टेरर, आतंक का साम्राज्य, लोगों में एक डर जो है वो लोगों में पैदा किया. सीवियर कंट्रोल उसने मेंटेन किया over the prices, over the society, over the politics. But finally, we know that he was obviously arrested and executed by those who were not agreed with his policies. After the fall of Jacobins, the power in France was now being controlled by the wealthier middle class people in France. So, fall of Jacobins in France allowed the wealthier middle class to control power. A new constitution, यहां पर क्या हुआ? A new constitution was formed. Right to vote was denied once again to non-propertied men. अभी हमने देखा था कि हमारा किस तरह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जैकोबिन्स हमारा सभी मेन जिनकी एज 21 ईयर्स एंड अबव थी उन सभी को राइट टू वोट दिया गया था. लेकिन अब फिर से जब पावर वेल्दियर क्लास के, मिडिल क्लास के हाथ में आ गई तो उन्होंने राइट टू वोट फिर से डिनाई कर दिया नॉन प्रॉपर्टी मेन इन द कंट्री. The new constitution provided
two national assemblies, or you can say two legislative assemblies, two legislative assemblies which further elected an executive body of five directors called डायरेक्टरी। यहां पर नए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया गया, दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का प्रोविजन किया गया, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी ये फर्दर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें 5 डायरेक्टर्स होते थे और इसको डायरेक्टरी कहा जाता था, इसको ये अपॉइंट करती थी। ये जो प्रोविजन किया गया था ये सोचकर किया गया था कि फिर से फ्रांस के अंदर पावर्स किसी रूलर के द्वारा मिसयूज ना की जा सके। जैसे रॉबेस्पियर ने पावर्स को सेंट्रलाइज्ड किया और उनको मिसयूज भी किया, तो इस तरह की किसी भी पॉसिबिलिटी को फ्यूचर में रूल आउट करने के पर्पज से उन्होंने क्या प्रोविजन किया कि भाई 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, और वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का चुनाव करेंगी जिसमें 5 डायरेक्टर होंगे, जिसको डायरेक्टरी बोला जाता था। अब ये जो डायरेक्टरी थी, जो डायरेक्टर्स थे, द डायरेक्टर्स usually involved in clashes with the legislative assemblies। अब ये क्या होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ इनके डिफरेंसेस बने रहते थे, एंड which led to their frequent dismissal, यानी कि फ्रीक्वेंटली उनको क्या कर दिया जाता था, रिमूव कर दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था। सो देयर वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फ्रांस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रूल ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के रूल के समय फ्रांस में क्या थी, इनस्टेबिलिटी। देयर वाज पॉलिटिकल instability in France during this period. Napoleon took advantage of it and became emperor of France in 1804। उसने इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पूरा फायदा उठाया और 1804 में वो फ्रांस का खुद शासक बन बैठा। Whatever the events were going on, whatever the situations, whatever the conditions were there in France, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के जो आइडियल्स थे, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एज वेल एज फ्रेटर्निटी,
they will remain the inspiring ideals for all the people in France as well as in other parts of Europe. And obviously, these ideals were inspired them to take action, to rise into action against the autocratic rulers within their own countries as well. So, with this action comes to an end. ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है. Hope that you will like my video. If you like my video, please comment, subscribe the channel, refer my channel to your friends who are in class 9th, and don't forget to press the bell icon so that you will be getting continuous notifications, frequent notification whenever a video is uploaded. Thank you, and remember my channel Incredible Scholars. Thank you. Have a happy learning ahead.